Continue. A straight line L with negative slope passes through the point 3, 24 and cuts the positive coordinate axis at P and Q. Minimum value of PQ as L moves, where O is the origin. Okay, fine. तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ऐसी एक लाइन है और अपने को पूछा है कि इस चीज़ की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जैसे अपन लाइन को मूव करते हैं. या ओके कूल. सो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? यू नो कि इंटरसेप्ट कैसे निकालते फिर वहाँ से वो वैल्यू आ जाएगी. आई गेट इट. कोई और तरीका नहीं है क्या? नहीं, आई डोंट थिंक कोई और तरीका है. सो या वी विल जस्ट हैव टू डू दिस. दिस थिंग इज़ 3, 24. लेट्स से अपना स्लोप जो है वो m है. सो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा अपने को वो निकालना है. जिस कॉट y-24 अपॉन x-3 इक्वल टू m. सो जब x इक्वल टू 0 है जस्ट हैव y इक्वल टू 24 -3m. वेट, sorry. And when y equal to 0 you have x-3 equal to -24 upon m. That means x equal to -24 upon m plus 3. Okay. सो अपने को एक्स और वाई इंटरसेप्ट बेसिकली मिल गए और अपने को क्या करना है, इसका स्क्वायर कर दो. सो या लाइक डिस्टेंस मिनिमाइज करना मतलब डिस्टेंस स्क्वायर भी मिनिमाइज करना है. सो दिस बी 24 -3 का एक काम करो ना, पहले इनको रिड्यूस करो. सो y/3 इज़ 8 - m एंड x/3 इज़, मैंने पहले ही रिड्यूस किया, लाइक वट एवर, फाइन. x/3 इज़ -8/m plus 1, राइट? ओके. और right, we can write this as m minus 8 upon m, something like that. और ये भी चीज़ क्या नेगेटिव ऑफ m minus 8 हो जाएगी. सो लाइक x, तो अपने को क्या मिनिमाइज़ करना है बेसिकली? अपने को मिनिमाइज़ करना है m minus 8 स्क्वायर्ड इंटू 1 अपॉन m स्क्वायर्ड प्लस 1 बेसिकली, राइट? ओके, नीड टू मिनिमाइज दिस थिंग. और मे बी अपने को एक्चुअल में वो ना ऐसा नहीं करना चाहिए अपने को. Right, we have to in fact minimize this thing. Yeah, cool. तो ये कैसे करेंगे हम? Come on, think. क्या अपन सच में इसका डेरिवेटिव लेना चाहते हैं? नहीं. Maybe like इसका natural log. Okay, we can try that. We know कि ये चीज़ निगेटिव है, सो इनफैक्ट इसको 8 - m ही रखो, वो बेटर रहेगा. और लेट्स से इसको क्यूब बोल देते हैं, लाइक इसका नेचुरल लॉग ले लेंगे. सो दिस इज बी लाइक 2 नेचुरल लॉग ऑफ 8 - m प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 + m स्क्वायर्ड माइनस मतलब -2 नेचुरल लॉग ऑफ m. अपने को ये चीज़ को मिनिमाइज़ करना है, राइट? सो वी वांट इट्स डेरिवेटिव टू बी 0. सो 2/8 - m नेगेटिव, yes, प्लस 1/1 + m स्क्वायर्ड इंटू 2m. और यहाँ पे हो जाएगा -2/m इक्वल टू 0. स्टिल बैड. ओके, अब ये कैसे सॉल्व होगा? स्टिल एज यार ये चेंज ही नहीं हो रहा है. ये लाइक क्या ये टाइप का बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा और फिर वो सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. मस्ट बी बेटर वे. ओके, वॉट एवर, बनाओ इसको बाई क्वाड्रेटिक कर डालते हैं. या इसको एक बाई क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर डालेंगे और दैट विल प्रॉबेबली गिव अस द थिंग. सो यहाँ से हो जाएगा 64 - 16m प्लस m स्क्वायर्ड अपॉन m स्क्वायर्ड प्लस ये सेम चीज़. तो 64 - 16m प्लस m स्क्वायर्ड लाइक दिस. सो दिस विल बी 64 upon m squared plus m squared. Okay,
फिर -16 इंटू 1/m प्लस m या ओके प्लस आई डोंट नो यार, थोड़ा अजीब है। 16/m and then you got this thing out of nowhere, और फिर जगह +1 + 16 = 65। ओके, कैन यू यूज़ दिस थिंग टू राइट दिस कम्प्लीटली? नहीं, कुछ और बेटर तरीका नहीं है हमारे पास। 16, why is that the thing? somehow उसका स्क्वायर ही निकलता है। Come on, think. 64 is like 8 square। अगर मैं इसमें एक और 2 square डाल दूँ, इसमें भी 16 square, तो यहाँ पर जगह 16 square upon m plus, this is a bad idea, upon m square of course, 16 upon m चाहिए, और फिर यहाँ पे नहीं, ये आइडिया अच्छा नहीं है। Again, of course, divide and stuff, but come on, isn't there anything we can do? अगर इसमें 2 डालते तो like 2 upon m plus, you know what, no, this is not what it should be like। अपने को इन दी एंड वो टाइप का बाइक्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर नहीं 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 नहीं, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। इट्स राइट। L moves where O is the origin. How do you minimize this thing though? Come on, you gotta think. डिपेंडिंग ऑन एक्स हमेशा अपन वाई ढूंढ सकते हैं, बट वो भी इनफैक्ट इन दी एंड इसी टाइप का कुछ ना कुछ देने वाला है। सो वी नीड टू मिनिमाइज दिस, और प्रॉब्लम इज कैसे। अपन ये बाइक्वाड्रेटिक बना भी दिया, बट इसको और सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा है। दिस इज जस्ट बैड। 64 is like 8 upon m square. नहीं यार, कोई आइडिया नहीं मेरे पास में, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी रखता हूँ वो चीज़ का स्क्वायर लाइक वो इसमें शो करेगा फॉर श्योर, सो दैट डजंट मेक सेंस। या लाइक वो हमेशा ये इक्वली रहेगा ना, तो वो काम नहीं करेगा। सो सम अदर वे टू डू दिस थिंग। अपने को इसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 वही करना पड़ेगा। दैट इज़ अ पेनफुल टास्क। थिंकिंग कोई बेटर तरीका है क्या, बट नहीं है इनफैक्ट। सो या देयर वी गो। इसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करना पड़ेगा अपने को। सो फॉर दैट 2 इंटू 8 माइनस m इंटू नेगेटिव ओके अपॉन 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 ओके, और फिर हो जाएगा 8 माइनस m स्क्वायर्ड, और फिर इसका डेरिवेटिव यानी कि -2 अपॉन m क्यूब। दिस थिंग हैज़ टू बी 0। सो एक हो सकता है कि m इक्वल टू 8, और मतलब ये तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो दूसरा पॉसिबिलिटी है कि -2 इंटू ऑल दैट स्टफ, सो -2 अपॉन m स्क्वायर्ड -2 प्लस 8 माइनस m इंटू ऑल दैट, राइट। सो वंस अगेन अपन -2 टू को अपन कैंसिल कर सकते हैं। सो दिस विल जस्ट बी 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8 अपॉन m स्क्वायर्ड अपॉन m क्यूब इक्वल टू 0, राइट। वेट व्हाट, नो, ये कैसे हो सकता है फिर? नो दिस इज जस्ट नॉट, ओह इट्स m क्यूब, राइट। तो ये हो सकता है इनफैक्ट। सो ये हो जाएगा 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा 64 माइनस 16m प्लस m स्क्वायर्ड अपॉन m क्यूब इक्वल टू 0, यानी 1 अपॉन m स्क्वायर्ड प्लस 64 अपॉन m क्यूब्ड माइनस 16 अपॉन m स्क्वायर, हो जाएगा -15 यहाँ पे।
फिर प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय m क्यूब, सो दिस विल बी 64 माइनस 15m प्लस m स्क्वायर प्लस m क्यूब इक्वल टू 0. इसका कोई इजी सॉल्यूशन दिख रहा है? आई डोंट थिंक सो. 64, 16 एंड 1 प्रॉबेबली नहीं, काम नहीं करेगा. इसको मैं 2 और नेगेटिव में कन्वर्ट कर दूँ क्या? नहीं, वो भी काम नहीं करेगा. इसका अपने को बाय हैंड एक सॉल्यूशन गैस करना पड़ेगा. लेट्स से 2. लेट्स ट्राई विथ 2. Who knows? So 8 plus 4 minus 30 plus 2. नहीं. ओके, सॉरी, प्लस 2 क्यों लिखा मैंने? प्लस 64 चाहिए पे. 8 प्लस 4 माइनस 30 प्लस 64. नो वे, नॉट वर्किंग. -2 करूँगा तो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा क्योंकि 64 प्लस 30 बहुत बड़ा हो जाएगा. सो 4, लेट्स गो विथ 4. This is yeah, like this thing is just 4 cubed, isn't that right? Okay, let's do this thing. नहीं, 4 में बहुत बड़ा हो जाएगा अचानक से. This will be like -60 and what not. -4 अपन ट्राई कर सकते हो, उससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये थोड़ा नहीं, स्टिल प्रॉब्लमेटिक है. You can go for 8, I know, but it's once again problematic. So अगर अपन 8 ट्राई करते हैं, दिस कैन बी रिटन एज लाइक 8 स्क्वायर. अगर अपन 8 ट्राई करते हैं देन वी कैन से 8 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 15 प्लस 8 इक्वल टू 0. नो, ये तो सब कुछ इवन है और फिर ये ऑड है, सो ये भी काम नहीं करेगा. आई डोंट नो इसके आगे क्या हो सकता है. और अपने को ओरिजिनल क्या दिया था? ओरिजिनल अपने को ढूंढना था या 9 टाइम्स वो सबसे लाइक उसका स्क्वायर रूट. सो वी वांटेड 3 8 माइनस m square root of 1 upon m square plus 1, something like this. So for that we wanted m, और अपने को अभी तक m तो मिला नहीं है. How are we even going to do this thing? This doesn't make sense. I've tried everything. कहीं अपना गलत तो नहीं हो गया कुछ? नहीं यार, सही तो लग रहा है. ओह नो, ओह नो, ये 8 अपन, ओह सॉरी, ये 8 माइनस एम है सिर्फ. ये 8 माइनस एम स्क्वायर कहाँ से आया? क्योंकि ऑलरेडी अपन 1 कैंसिल कर चुके थे ना. सो या दैट्स वाई ये इतना कॉम्प्लिकेट हो रहा है. स्क्वायर था ही नहीं उसमें. सो ये रिलेटिवली ईजी होना चाहिए. सो लेट्स मल्टीप्लाई बाय एम क्यूब. दिस विल बी m प्लस एम क्यूब प्लस 8 माइनस m, राइट, इक्वल टू 0 आई थिंक. ओके, सो यहाँ से हो जाएगा m क्यूब इक्वल टू -8, यानी कि m इक्वल टू -2. यू गॉट दिस राइट. और अब इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस विल जस्ट बी 3 इंटू 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या था, m इक्वल टू -2. सो 1/4 प्लस 1 यानी कि 5/4. सो दिस विल बी 3 इंटू 5 इंटू स्क्वायर रूट 5, right, which is 15 square root 5. Okay, next question. Let 3 matrices be this thing, then trace of a plus trace of abc upon 2 plus trace of a into bc square upon 4 plus. तो अच्छी बात ऐसी है कि ये जो मैट्रिसेस रहेगी ये भी 2 इंटू 2 मैट्रिसेस ही रहेगी सारी. सो यू कैन राइट दिस एज ट्रेस ऑफ a प्लस, okay, in fact like this, a into 1 plus bc upon 2 plus bc upon 2 का स्क्वायर एंड देन सो ऑन, राइट. ओके कूल. होपफुली ये चीज़ कुछ तो भी देती है अपने को स्पेशल फाइनाइट वैल्यू. लेट्स सी bc है क्या इनफैक्ट. सो ओह लुक एट दैट, bc इज
something very much like adjoint. I don't know. We'll try BC. 3 2 4 3 3 minus 2 minus 4 3. सो पहला वेक्टर टाइम्स सारी रोज. सो अपने को मिलेगा क्या क्या कहता था मैं, हाँ 9 माइनस 8 एंड 6 माइनस 6 या, और फिर दूसरा वेक्टर टाइम्स रोज. सो माइनस 12 प्लस 12 एंड माइनस 8 प्लस 9. आई न्यू दिस थिंग क्योंकि ये एडजॉइंट ही था ना उसका. सो दिस विल बी -1 और दिस इज जस्ट दिस इज 1, सॉरी नॉट -1, और ये भी 1 है, राइट. ओह, इट जस्ट टर्न्स आउट टू बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो ये जो पूरी चीज़ है गंदी सी, इनफैक्ट ये क्या है, इट्स लाइक 1 प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपॉन 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपॉन, इसको 1 ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना चाहिए. सो ऑन. सो दिस विल जस्ट बी a into 1 plus 1 by 2 plus 1, you know the thing. So ये 2 हो जाएगा. So it's a trace of 2 times a, यानी कि 3 times 2 6. Cool. Next, let f from real to real be continuous bounded function and g of x be this thing. Then g of x is okay, g of x is negative infinity, say infinity integration of f of x comma t dt's. Okay, it depends on both x and t. G of x is, so this is a continuous function and bounded as well. Bounded function, but it goes to real. So okay, cool. And like something like a polynomial function, so f of x comma t, and goes from negative infinity to infinity, or this is bounded. How can you use that fact? It depends on x as well. So it's depending on x, like why, like you know it's differentiable like that, but it is differentiable everywhere. और like अगर इस चीज़ को कुछ भी फाइनाइट वैल्यू होनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स, why is this 1 plus t squared over there? उसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट. It's gonna be like very very large and like that. Okay, we know it's differentiable everywhere in that case, right? You should get like this is some sort of function of x and x comma t. No, it's gonna be like that. I don't know, x comma t क्यों, f दो वेरिएबल का फंक्शन कैसे, नॉन डिफरेंशियल एट लीस्ट 1 पॉइंट. आई डोंट नो व्हाट यू मीन बाय दैट. कोई एसिम्टोल्स तो नहीं है 1/1 plus t square में. इट्स वेरी डूएबल, राइट. या लाइक 1/1 plus t square, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और फिर ये बस डिक्रीज होता जाता है एंड स्टफ. एंड इसका जो डेरिवेटिव है दैट इज जस्ट -2, सॉरी नेगेटिव क्यों आ जाएगा, दैट इज जस्ट t अपॉन 2t/1 plus t square का स्क्वायर एंड देन नेगेटिव. सो दिस थिंग इज लाइक ऑलवेज फाइनाइट, और t इक्वल टू लाइक यहाँ पे इस टाइप का कुछ तो भी फंक्शन है, राइट. 1/1 plus t square एंड दैट टाइम्स f of x comma t कुछ तो भी रहेगा. और f एक कंटिन्यूस फंक्शन ऐसा बोला है, राइट. then g of x is, I'm gonna say it's continuous everywhere. That's what I think, क्योंकि f continuous है. किस वेरिएबल में कंटिन्यूस है अपने को नहीं पता, बट कंटिन्यूस तो है ना.
So yeah, like we can assume कि this is probably continuous everywhere, right? क्योंकि this should be like that. Yes. Okay, whatever. Next question. If 1 plus x to the power of n equal to this thing, then the value of summation from 0 to n of this thing. Oh, okay. I know इसको कैसे करते हैं. So एक काम करो, multiply this thing by x. So x into 1 plus x की power n equal to like summation of ck from 0 to n, right? And that times x to the power of k plus 1. Cool. और फिर इसका एक डेरिवेटिव ले लो. That makes sense. इसका डेरिवेटिव ले लेंगे. So this will be 1 plus x की power n plus x तो रह जाएगा, और this will be n x to the power of n minus 1 times x, so x power n equal to summation from 0 to n of k plus 1 c k x की power k plus सिर्फ k क्योंकि एक चला गया. अब इसको वापस x से मल्टीप्लाई कर डालो. So this should be x into 1 plus x की power n प्लस, मैं इसको इस टाइप से क्यों लिख रहा हूँ, उसको डायरेक्टली x प्लस एक्स पावर n प्लस 1 क्यों नहीं लिखा मैंने, राइट? दैट वुड बी बेटर. सो ये जो पूरी चीज़ है, यू कैन राइट दिस एज 1 प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n. फिर इसको अपन ने x से मल्टीप्लाई कर डाला. सो जस्ट x प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n प्लस 1. दैट थिंग इज़ लाइक समेशन फ्रॉम 0 टू n, और ये सारी चीज़ k प्लस 1 सी के एक्स की पावर k प्लस 1, और फिर इसका एक डेरिवेटिव ले लेंगे. सो इट्स लाइक 1 प्लस k प्लस 1 स्क्वायर्ड एक्स की पावर n इक्वल टू ऑल दैट सब. सो अब सिर्फ इसमें 1 पुट कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर. सो दिस इज द थिंग, k प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1. और यहाँ पे n ही चाहिए था, यहाँ पे k नहीं चाहिए था. या n प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1, राइट? You got to put x equal to 1, right? ओह सॉरी, ये 1 प्लस एक्स पूरी की पावर n है. मैं क्या कर रहा हूँ आखिर. फिर अपन ने दोनों टाइम डिफरेंशिएशन गलत टाइप से किया. ऐसा नहीं लिखना है इसको, मैंने गंदा लिखा इसलिए ऐसा हुआ. सो 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस एन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1. फिर x से मल्टीप्लाई करो. सो x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस एन एक्स स्क्वायर्ड, यस 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1. फिर इसका डिफ्रेंसिएशन वापस कर दो. सो लाइक दिस थिंग, दिस कंप्लीट थिंग, 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस एन एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1. सॉरी, एन एक्स की पावर नहीं, एन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस इस चीज़ का डेरिवेटिव. सो 2n x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर्ड 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 2. अब x इक्वल टू 1 पुट करो इसमें से. इट विल बी 2 पावर n प्लस n इंटू 2 पावर n माइनस 1 प्लस 2n इंटू 2 पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू 2 की पावर n minus 2. So this is 2 power n plus, in fact एक काम करो, 2 power n minus 2 कॉमन ले लो इसमें से. So 2 power n minus 2 कॉमन, this will be 4 plus 2n plus, so यहाँ पे 2 आ जाएगा. like 4n plus n into n minus 1, which is n square minus n basically. सो यहाँ से एक गया एंड दिस जस्ट बिकम्स 2 पावर n माइनस 2 इंटू n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4. या नहीं, n माइनस 2 चाहिए मुझे. ओके, नेक्स्ट. द रेंज ऑफ दिस इज, ठीक है, cot इनवर्स ऑफ नेगेटिव x माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस इनवर्स. This is bad. Okay, so cot inverse, it goes from 0 to pi. This thing goes from
negative pi by 2 to pi by 2, and this thing goes from once again just 0 to pi, राइट. तो अपने को दो केसेस लेने पड़ेंगे, एक कि x पॉजिटिव है, एक में x नेगेटिव है. ओके, इफ़ x पॉजिटिव तो लेट्स जस्ट से ठीक है कॉट इनवर्स ऑफ नेगेटिव x. कॉट इनवर्स ऑफ नेगेटिव x मतलब तुम्हारे पास में ये सर्कल ड्रॉ करूँ, यहाँ पे कुछ तो भी वैल्यू थी जो कि अपने को x दे रही थी, राइट. सो कॉट थीटा इक्वल टू x, और फिर नेगेटिव x कौन सी वैल्यू देगी, पाई माइनस थीटा, राइट. दिस वाज जस्ट कॉट इनवर्स ऑफ x, एंड दिस एंगल इज pi minus cot inverse of x, which is cot inverse of negative x. This is pi minus cot inverse of x, okay, minus tan inverse of x. So जो कि सिर्फ उतना ही है, and we can definitely write this thing as pi by 2 minus cot inverse of x like that. ठीक है, वैसे तो अपन लिख सकते हैं. Yes, yeah, that's right, I think. ओह सॉरी, बट ये नेगेटिव भी था, राइट. सो दिस इज नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा. होपफुली दिस विल बी गॉन. सो पाई माइनस पाई बाई टू जस्ट पाई बाई टू. फिर फाइनली है सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स. सो वंस अगेन यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, सीकेंट इनवर्स एक्स इज या जस्ट सीकेंट इनवर्स एक्स गोज फ्रॉम 0 to पाई बाई टू इन दिस केस. एंड लाइक इसकी अपने को मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखनी पड़ेगी. सो सीकेंट इनवर्स एक्स गोज फ्रॉम 0 to पाई बाई टू. जब 1 रहेगा तो 0, जब इन्फिनिटी रहेगा तो या दैट मेक्स सेंस होपफुली. 0 to पाई बाई टू. हाँ. ओके, सो मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम इज जस्ट पाई, मिनिमम इज पाई बाई टू. तो ये तो जब x पॉजिटिव है तब की बात है. इफ़ x नेगेटिव दैट मीन्स अपन x को नेगेटिव t बोल सकते हैं. t नहीं है, नेगेटिव y बोल दूँ. सो कॉट इनवर्स ऑफ y, जहाँ पे y ऑब्वियसली पॉजिटिव, लाइक वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा एंड स्टफ. फिर नेगेटिव टैन इनवर्स ऑफ नेगेटिव y विच इज़ इन फैक्ट पॉजिटिव टैन इनवर्स ऑफ y लाइक दैट. ओके, और secant inverse of negative y, yeah, that's just pi minus sec inverse of y like that. तो ये चीज़ तो पाई बाई टू होती है. दिस इज जस्ट 3 पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स ऑफ y. सो मैक्सिमम क्या रहेगा, 3 पाई बाई टू, एंड मिनिमम इज व्हेन यू हैव this thing being what, pi by 2, this will be pi. So yeah. Oh, and by the way ये जो है यहाँ पे pi close interval में and pi by 2 open में. So it's going like pi by 2 से 3 pi by 2, except of course अपने को pi नहीं चाहिए, right. This cannot be pi. Yeah, this looks nice. Next, equations of the common tangent to the parabola is or are. The equation of the common tangent to the parabola oh okay cool, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं इसमें कोई. yeah like okay, नो प्रॉब्लम. सो पहले इसका देखते हैं. जस्ट हैव m इक्वल टू 2x प्लस 4, राइट. सो अपना जो स्लोप रहेगा वो मिल गया अपने को, एंड इट विल जस्ट बी y इक्वल टू एम एक्स विच इज जस्ट 2x प्लस 4. इसको x नॉट बोलती. एक काम करो, इसको अल्फ़ा बोल दो. सो अल्फ़ा पहले वाले इक्वेशन पे है. सो 2 अल्फ़ा प्लस 4 into x minus like okay into x minus original जो वैल्यू थी which is just alpha, okay, plus
प्लस जो वैल्यू अल्फ़ा की थी, मतलब वाई वैल्यू थी जो अल्फ़ा से आई थी, दैट इज़ जस्ट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा प्लस 8। और यहाँ पे रहेगा दूसरे इक्वेशन में y इक्वल टू बीटा यूज़ करते थे, सो लाइक 2 बीटा प्लस 8 इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस ऑल दिस स्टफ, सो प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 8 बीटा प्लस 4 एंड वी समहाउ हैव कि ये दोनों सेम ही लाइन है, सो यू शुड हैव 2 अल्फ़ा प्लस 4 इक्वल टू 2 बीटा प्लस 8, पहला इक्वेशन। एंड सेकेंडली यू शुड हैव लाइक, तो यहाँ से -4 अल्फ़ा तो कैंसिल ही हो जाएगा, राइट? एक मिनट नहीं, शुड डू दिस थिंग, -2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस, सॉरी -4 अल्फ़ा, राइट? जब अपन माइनस अल्फ़ा इसमें मल्टीप्लाई करें तो या -2 अल्फ़ा स्क्वायर -4 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा प्लस 8 ही है ना? हाँ। और सेकंड में आएगा -2 बीटा स्क्वायर -8 बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 8 बीटा प्लस 4, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, राइट? कूल। सो इसको सिंप्लीफाई करते, दिस इज माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा श्योर, प्लस 8 इक्वल टू माइनस बीटा स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया, प्लस 4। सो बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू -4, या फिर मुझे बोलना चाहिए कि अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4। ये एक इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन अपने पास ऑलरेडी था विच वॉज दिस थिंग, सो 2 से डिवाइड कर दो, अल्फ़ा प्लस 2 इक्वल टू बीटा प्लस 4, मतलब कि अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 2। सो यहाँ से अपने को समझ रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा शुड बी 2 एज वेल, विच गिव्स अस बीटा इक्वल टू 0, अल्फ़ा इक्वल टू 2। ओके, तो अपने को बेसिकली मतलब वो मिल ही जाएगा, या जस्ट लाइक दैट। सो बीटा इक्वल टू 0 सिर्फ इसमें पुट कर देते, this will be gone, this will be gone, everything will be gone. So y equal to 8x plus 4. Next question. In fact, wait. Sorry, गला ड्राई हो रहा है. Next. Let P be a point in space and Q be a point on the line. If PQ is parallel to the plane, then PQ का mod. ठीक है ना, तो फिर Q को पैरामीटराइज कर डालेंगे और फिर PQ is parallel to this plane. राइट, ऑल दैट मीन्स इज कि ये जो नॉर्मल है वो इस वेक्टर से भी नॉर्मल रहेगा, या देन मॉड ऑफ पी क्यू इज मॉड ऑफ पी क्यू, विल सी दैट। ओके, एटलीस्ट पहले पैरामीटराइज कर लो। सो क्यू जो रहेगा दैट इज 702 प्लस I don't know, say like t times -3, 1 and 5. Okay, और p तो वो है, so pq. Instead let's just talk about qp. So qp नहीं, हाँ qp vector नहीं यार, wait, sorry, pq is correct, like it goes from p to q, so q minus p. This will be so q minus p, this will be 4 2 minus 4 plus t into -3 1 5. Okay, and this is parallel to that plane, so ये times like, okay, so this thing dot pq vector dot 1 minus 4 3, that will be 0, that's what they mean. So let's do this thing. 1, which is called, okay, 4 minus 8 minus 12 plus t into, let's see, -3 minus 4 plus 15 equal to 0. From this we can figure out t क्या है और वहाँ से अपने को मैग्नीट्यूड मिल जाएगा. So this is
-8 होना चाहिए, -16 plus t into this is -7, so 15 minus 7 is 8, so t is 2. Nice. t is 2. We can figure out pq क्या है. Okay, let's delete all this. So this is 4, 2 minus 4 plus 2 into all that's like -6 to 10. Like this. अपने को इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, which is of course is 2 square root of 1 squared plus 2 squared plus 3 squared. Wait. Okay, which is 2, 1 plus 4 plus 9, right? So 5 plus, okay, 14 of course, 2 square root of 14. Next question. The area bound by the curve, the axis of coordinates and the ordinate of some point of the curve is equal to the length. What? Axis of coordinates. कुछ तो भी curve है, I don't know, कुछ तो भी इस टाइप का curve होगा. Where you curve the axis of the coordinates and the ordinate of some point of the curve. Okay. Is equal to the length of the corresponding arc of the curve. Corresponding arc क्या? कौन सा arc? What does this even mean? Maybe like वो इस arc की बात कर रहे हैं. Who knows? और ये जो एरिया है ये इस आर्क के इक्वल है एट एवरी गिवन पॉइंट, तो उनके जो डेरिवेटिव्स रहेंगे वो भी इक्वल रहेगी प्रॉबेबली, और वो मे बी लाइक सिंपलर रहेगा इस पूरे चीज़ से. सो ये जो एरिया है इसका डेरिवेटिव तो ऑब्वियसली ये फंक्शन हो जाएगा, सो एफ ऑफ एक्स, राइट, या लाइक दैट. और जो आर्क है उसका स्मॉल डिफरेंशियल कैसे निकालोगे, ये रहेगा, राइट. सो दिस विल बी लाइक dx, this is mod dx of course, and mod dy, और ये जो है like yeah, और ये डिक्रीज नहीं हो सकता, आई डोंट थिंक ये डिक्रीज होता है, सो दिस शुड ऑलवेज जस्ट इंक्रीज. दिस इज लाइक ऑफ कोर्स ds which is basically square root of dx squared plus dy squared, which can be written as dx square root of 1 plus m squared, और वो अपन ऑलरेडी एफ एच ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड दिस थिंग अपॉन dx ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे भी yeah, this makes sense. So equal to square root of 1 plus f dash of x squared, right. So वहाँ से आ जाएगा f of x square equal to 1 plus f dash of x square. In fact f को तुम y बोलो अभी, so y squared equal to 1 plus y dash squared, like that, right. That means y squared minus 1 का square root, that thing is just dy by dx. So वहाँ से अपने को मिलेगा dy upon square root of y squared minus 1 equal to dx, like that. And hopefully ये कुछ अच्छा अपने को अच्छा दे. Let's integrate this thing. So y को अपन sec theta पुट कर सकते हैं. This will be something like tan theta, और यहाँ पे sec theta tan theta हो जाएगा, d theta इसका इंटीग्रेशन, राइट. एंड या दिस विल लाइक नेचुरल लॉग ऑफ, ओ गॉड ये तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया. या ये ऐसे कॉम्प्लिकेट कैसे हो गया आखिर? अपने से y को sec theta में पुट किया था, why should it be like this complicated? I don't know. Okay, sec theta plus tan theta जो कि होता है y plus tan theta is just square root of y square minus 1, like that. And this thing is of course x plus some constant. Oh god. Okay, cool, no big deal. And now what? And this passes through 0, 1. So अगर मैं इसमें 0 पुट कर देता हूँ, इसमें पुट 1 करिए ना, so like 1 का नेचुरल लॉग दैट इज 0, so 0 इक्वल टू 0 प्लस c, मतलब कि c शुड बी 0 एज वेल. ये तो गया. सो नेचुरल लॉग हटाने के लिए यहाँ पे e डाल देंगे. मॉड है ना, दिस इज प्रॉब्लमेटिक थिंग, बट चलो ठीक है यार, विल जस्ट से कि y पॉजिटिव है, इवन दो वो काइंड ऑफ चीटिंग है, बट विल जस्ट अज्यूम कि y पॉजिटिव है. ओके,
So this will be square root of y square minus 1 equal to, नहीं वो काम का नहीं रहेगा, या लाइक oh you can write, तुम इसका रेसिप्रोकल ले सकते हो दोनों साइड्स का. सो दिस विल बी, अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ दैट विल बी लाइक, पहले तो इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको वी कैन राइट दिस एज 1/y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू ई पावर x, और फिर रेसिप्रोकल लो. सो y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू ई पावर नेगेटिव x, बट वी ऑलरेडी नो कि y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू ई पावर x. वाह, बहुत सारा अपना काम बच गया है ये चीज़ करने से. सो ऐड कर दो, जस्ट गेट y एज ई पावर नेगेटिव x प्लस ई पावर x अपॉन 2. आई थिंक मैंने कहीं तो ये देखा हुआ है, बट वट एवर, या मतलब मैंने कहीं भी देखा हुआ तो है, याद नहीं आ रहा है क्या है एग्जैक्टली. ओ दिस थिंग, राइट राइट, लुक एट दैट, ये ऑब्वियसली वो है. दिस इज द आर्क, नहीं, हाइपरबोलिक कोसाइन, सो इट्स जस्ट कोसाइन एच, राइट. एंड कोसाइन इनवर्स में just have this thing, yeah, this should be cosine h of x of course, yeah whatever. सो 2 को उधर भेज दो क्योंकि वो ऑप्शंस में है. सो 2y इक्वल टू, हाँ ये कैसे हो गया, x इंटू ई पावर x माइनस, ओके हाउ दैट जस्ट वेंट अवे. ओके, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा. यहाँ पे x क्यों डाल दिया तुम लोगों ने. इट्स लाइक नो, वाई इज नॉट दिस थिंग. यहाँ पे x की इन्वॉल्वमेंट होनी नहीं चाहिए ना. लाइक मोस्टली आई थिंक ये चीज़ हो सकती है करेक्ट, बट कंसिडरिंग कि y ई पावर x माइनस 1 वो सब है, हाउ इज दिस इवन करेक्ट. कुछ गलत किया क्या अपन ने. मैं चलो हटाया, नो प्रॉब्लम विद दैट. This is y squared equal to that. First one is 1 equal to dy by dx for sure. That's how it should be. और फिर वो नीचे गया और हमने ये चीज़ की. इंटीग्रेशन ऑफ sec theta is different, just natural log of sec theta plus tan theta. So वो पुट करने के बाद में just get this thing and yeah. What's the big deal about it? Oh wait, no, 2x कैसे इसमें इन्वॉल्व है तो that should be making sense. यहाँ पे x की इन्वॉल्वमेंट होनी नहीं चाहिए, राइट. I don't get it. No, this is not 2, like, yeah, it's not like that. How the heck does that make sense? ये x कैसे हो सकता है फिर. कहाँ गलत जा रहा हूँ मैं. I don't get it यार. I don't know. Equation of this curve is none of these, so it's just y equal to e power x plus e power negative x upon 2. That's what this equation is in fact. हो सकता है कि अपन ने ये वाले इसमें लाइक इंटीग्रेट करने के बाद में अपन ने जो वैल्यूज पुट करी उसमें प्रॉब्लम हुई होगी, राइट. सो वी हैड दिस थिंग, राइट, x प्लस सम कांस्टेंट, और फिर अपन ने 0,1 इसमें पुट किया था, जिस गेट 1 प्लस
0, so natural log of 1 is 0 and x is also 0, so c should be 0. Yeah, from that अपन ने e power, yes, I don't know, अगर ये सही नहीं है तो क्या है? Next, if a, b and c are three numbers not necessarily different, chosen randomly and with replacement from the set, and okay, c are three numbers necessarily different, chosen randomly and from the set, okay, the probability that ab plus c is even and with replacement, okay, cool, मतलब yeah, I get it, the probability that ab plus c is even, right? So अगर c even है then ab should be even, यानी कि उनमें से एक ना एक even होना चाहिए, तो ऐसे कितने केसेस हो सकते हैं? So c even सिर्फ दो तरह से हो सकता है और a even कितने तरह से हो सकता है? या लाइक दो तरह से 2 into 5, क्योंकि उनमें से कोई भी तुम 5 चुन लोगे तो चलेगा. वेट व्हाट, नो, क्योंकि इसमें सारे इवन भी आ जाएगा ना, तो वो अपने को नहीं चाहिए. सो एक काम करो, ए इवन बी ऑड, उसके लिए हो गए 2 into 3, फिर प्लस बी इवन ए ऑड, उसके लिए वापस 2 into 3 और फिर 2 into 2, राइट? तो ये सारे तरीके हैं कि अगर सी इवन हो तो ऑल ऑफ दिस शुड बी हैपनिंग, और अगर सी ऑड है देन बोथ ए एंड बी शुड नेसेसरली बी ऑड, सो जस्ट 3 into 3 तरह से हो सकता है अपॉन हर एक ऐसे 5 चॉइसेस, तो जस्ट 5 क्यूब्ड. Yeah, so this is 2 into 6 plus 6 is 12, 12 plus 4 is 16, okay, plus 27, so यहाँ से हो जाएगा अपॉन क्या 125, नहीं कि 2 into 6 is just 32 plus that is like 59. Okay, next question. A person writes letters to his 5 friends and addresses the corresponding envelopes. Number of ways in which the letters can be placed in the envelope so that at least 2 of them are in the wrong envelopes. Number of ways in which letters can be placed in the envelope so at least 2 of them are in the wrong envelope. So number of ways ki at least 2 of them, at most 2 of them. Okay, think about it, like 2 wrong, फिर 3 wrong और 4 wrong, 5 wrong, इस टाइप से हो सकता है. तो जो 1 wrong और 0 wrong वाले हैं, that makes sense. 1 wrong तो हो नहीं सकता, या like at least 2 of them are in the wrong. तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन है कि एट मैक्स एक रॉन्ग हो, राइट? कि 2 या 2 से ज़्यादा वाले नंबर्स नहीं लेने अपने को, उनसे कम वाले सारे नंबर्स लेने. सो 1 रॉन्ग तो हो नहीं सकता, दैट्स इम्पॉसिबल. तो 0 रॉन्ग हो, वही एक तरीका है, उसका एक ही तरीका है, राइट? सो yeah, that about makes sense. हाँ, 1 रॉन्ग तो हो नहीं सकता, सो दूसरा है कि 0 रॉन्ग हो. ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट इट शुड बी लाइक. सो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज विच इज़ आई गेस 5 फैक्टोरियल, राइट? ओके, 5 फैक्टोरियल माइनस 1 आई गेस. या सो एक ही तरीका है कि इसकी अपोजिट कंडीशन हो, और वो अपोजिट कंडीशन है कि या तो एक रॉन्ग हो जो कि इम्पॉसिबल है, या फिर 0 रॉन्ग हो जिसका सिर्फ एक ही तरीका है. सो दैट्स इट. 5 फैक्टोरियल माइनस 1. 5 फैक्टोरियल इज लाइक 5 into 4 into 3 into 2. सो 5 into 4 is 20 into 6 यानी कि 120. So 120 minus 1 is यानी कि 119. नेक्स्ट क्वेश्चन. Let alpha be this thing, beta be this thing, and gamma be this thing. Then the correct order sequence is, okay, inequality.
अपने को वैल्यूज ढूंढनी पड़ेगी। ओह वेट व्हाट, ये कैसे टाइप के, ये तो रेशोज नहीं है। सो हाँ, cot alpha equal to pi by 3 which is of course bigger than 1। और ये कब हो सकता है कि that means like cosine alpha is bigger than sin alpha something like that। मतलब let's just assume कि वो सारे इसमें क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में के, राइट, क्योंकि कॉट इनवर्स, साइन इनवर्स, सेकंड इनवर्स, इन सब में फर्स्ट क्वाड्रेंट तो कहीं ना कहीं आता ही है, और ये सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ है, सो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट के। सो कोसाइन बिगर देन साइन ये कब होता है, व्हेन यू हैव अल्फा लेस देन पाई बाय 4, दैट्स व्हेन दिस कैन हैपन। ओके, सो यू गॉट दिस थिंग। ओके, एंड बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ पाई बाय 4, साइन बीटा इक्वल टू पाई बाय 4 विच इज़ लेस देन 1, राइट, मतलब वो तो ऑब्वियसली रहेगा ही। एंड आई डोंट नो, फिर क्या ये 1 बाय स्क्वायर रूट से, लाइक आई थिंक इट इज़ बिगर देन 1 बाय स्क्वायर रूट 2, दिस इज बिगर देन 1 बाय स्क्वायर रूट 2, so is pi bigger than 2 square root 2, is 3.14 something bigger than 2 into 1.4 is like 2.8 something, yes this is obviously correct, this is bigger than 1 by square root 2, मतलब कि बीटा bigger than pi by 4। ओके, सो एटलीस्ट अपने को ये तो समझ गया कि बीटा इज़ बिगर देन अल्फा। सो एलिमिनेट करते हैं कुछ ऑप्शंस को, ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये या फिर ये। ओके, अब गामा के बारे में सोचते हैं। सो गामा इज सेकंड इनवर्स ऑफ ऑल दैट स्टफ, मतलब ओके, सो लाइक कोसाइन गामा इज 3/2 पाई। ओके 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 ओके, फाइन, 3/2 पाई और 1 बाय स्क्वायर रूट में क्या कंपैरिजन है, इट्स लाइक 3/2 into 3 point something, so smaller than half, yeah, and 1 by square root 2 is like bigger than 1/2 because 1/2 का square root obviously उससे बड़ा होगा, that means 1 by square root 2 is which is bigger than 1/2, that's also like bigger than 3/2 pi, right? So yeah, like cosine gamma less than 1 by square root 2, that means gamma is bigger than pi by 4, so सिर्फ अल्फ़ा है जो कि दोनों बीटा और गामा से छोटा है, सो दिस शुड बी द करेक्ट थिंग। नहीं यार, इसमें भी तो सेम ही है, या अपने को गामा और बीटा के बीच में देखना पड़ेगा। सो यू हैव साइन बीटा इक्वल टू पाई बाय 4 एंड कोसाइन गामा इक्वल टू 3/2 पाई, राइट? सो साइन गामा equal to square root of 1 minus 3/2 pi का square, and I don't know, it sounds like, क्या ऐसा है कि pi by 4 bigger than square root of 1 minus 3/2 pi का square, which would be the same as saying pi squared by 16 bigger than 1 minus 9/4 pi squared, यानी कि pi squared upon 16 bigger, okay, plus 9/4 pi squared bigger than 1, yeah, like pi squared is approximately 10, so 10 by 16 plus 9/40, and 10 by 16 is I don't know, 5/8, 5 into, अरे यार, 16 is 0.0625, I think, like this is 2 power 5 upon all that stuff, but 10 times of that, so 0.625, okay, plus 9/40, which is 9/4 is just 2.5, no, 2.25, okay, that upon 2 is like plus 0.2
225, something like that. So it's bigger than 1? No, it's not, right? Yeah, like in fact ये छोटा है 1 से. But then like pi squared, let's consider कि pi squared यहाँ पे 9 इनपुट करते हैं और यहाँ पे 10 इनपुट करते हैं. So this will be 4 into 9. This will be 1 by 4, which is 0.25. Even then ये bigger than 1 नहीं है, तो this is like less than 1. मतलब उल्टी इनइक्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि what you have is sin like sin beta less than sin gamma, मतलब कि beta less than gamma basically. This should be the correct thing. Okay, cool. Next question. Let f and g be two functions both being defined real to real as follows. Okay, x plus mod of x upon 2. So जब x नेगेटिव है तो फिर f of x तो 0 है, जब x पॉजिटिव है then f of x is just x. Okay, and g of x is x for, graph this thing. F of x is just like this, और g of x क्या है? It's x when x is less than 0, or that should be like this thing. Okay, this is like that. Okay, or x squared for x bigger than or equal to 0. So यहाँ पे कभी 1 होगा, और in this case it just goes like this. Okay, so now what? F of g is defined but g of f is not. F of g is always like when x is less than 0 it's just negative, and that means when x is less than 0 g of x is also less than 0. That means f of g of x, that thing is 0. So f of g of x, मैंने क्या लिखा ये, f of g of x is like this. So when x is less than 0 this thing just turns out to be 0 as well. Oh wait, nahin, yeah, okay, fine, no problem, right? And when x is equal to 0 our g of x क्या है? x squared, so वो तो 0 हो जाएगा. चलो bigger than or equal to 0, so it will just be x squared जो कि bigger than or equal to 0 है. So we can write this thing as just x squared when x is bigger than or equal to 0. Okay, or that's cool. So in fact yes, f of g is a continuous differentiable function thing. और g of f की बात करते हैं. So when x is less than 0 f is just 0, so this will be x squared जो कि continuously 0 होगा. So when x is less than 0 this thing is continuously 0, right? Yeah, it's not or equal to, like whatever, as if it makes a difference. Okay, and when x is bigger than 0 your f thing is x, so this is x squared once again, right? When x is bigger than 0. Okay, cool, this makes sense, fine. So basically yeah, ये दोनों तो exactly equal functions हैं. So both f of g and g of f are defined and they are equal functions. Next question. A ladder x unit long slides in vertical plane with its end in contact with vertical wall and a horizontal floor. Okay, along the x-axis the locus of a point on the ladder 4 units, this is the ladder basically, 4 units from its foot will be an ellipse. So 12 unit long एक ladder है, यहाँ पे सपोज भी locus है, this will be an ellipse whose latest rectum is right. Okay, और अपने को ये निकालना पड़ेगा.
यू जस्ट नो कि ये पूरी लेंथ हमेशा 12 रहती है, राइट। और ये तो 4 है और ये 6, सॉरी ये 8 रहेगा। मतलब प्रॉब्लमेटिक नहीं है, अपने को सिर्फ ये 2 पॉइंट्स ढूंढने हैं। एक काम करो, इस पॉइंट को वी विल जस्ट से इज x, 0, देन वी कैन फिगर आउट व्हाट दिस पॉइंट इज। इट्स जस्ट 0, y, एंड यू जस्ट गॉट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर, सो दैट जस्ट गिव्स अस y स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सो उसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, 0, स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ओके कूल, सो यू गॉट ये पॉइंट्स, और ये जो रहेगा दैट विल जस्ट बी, this is like in ratio 1:2, right? So this will be 2 times of this guy, so 2 times of x, 0 plus 1 times of this guy, which is 0, square root of 12 square minus x squared upon 3, right? So this will just be 2/3 of x, 1/3 of square root of 12 square minus x squared. अब एक काम करते हैं, इसको x0 लिख देते हैं just for the sake of thing. So x is 2/3 x0 and y, so ये x और y वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, so this is 1/3 of square root of 12 minus x0 square. Cool, that means y squared equal to, or I should say like 3y का square, whatever, y squared equal to 1/9 of 12 minus x0 squared, but we know what x0 is, or better yet, we know what x0 upon 3 is. This thing is just 4/3 minus x0 by 3 का square, but x0 by 3 क्या है, x/2, so x squared upon 4, there you go. So this is like y squared plus x squared upon 4 equal to 4/3, and that just gives us x squared upon 4/3, it's like 16/3, plus y squared upon 4/3 equal to 1, like this. And then you just want what, the latest rectum. Obviously ये जो है वो मेजर एक्सिस वाला, मतलब x मेजर एक्सिस है इन दिस केस, एंड लेटेस्ट रेक्टम क्या रहता है, जब तुम ए ई पर हो, तुम फोकस पे हो, तो तुम्हारा y वैल्यू जो है 2 टाइम्स ऑफ दैट, सो 2 टाइम्स ऑफ what is the y value in that case. All you have is like x squared upon a squared plus y squared upon b squared equal to 1, right? When your y is 0, okay, तो ये तो चला ही गया, and this is ae, wait what, सॉरी y तो अपने अभी तक निकाला नहीं है, एंड दिस थिंग विल जस्ट बी ए ई, सो ये ई स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 1 माइनस ई स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर इज जस्ट बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, विच लुक्स वियर्ड बिकॉज ई स्क्वायर बाई इटसेल्फ, दैट्स लाइक वाई इज b square root of 1 minus e squared, but guess what, b is just a square root of 1 minus e squared, so this thing is a into 1 minus e squared, like that. Or you can write this thing as b squared upon a, so yeah, like 2b squared upon a, that is the latest rectum. So 2 into 16 upon 9 upon 16 upon 3, 16 गए, 9 upon 3 का 3 हो जाएगा पे, so it's just 2/3 hopefully, right? Yeah, it's 2/3. Yeah, it should be 2/3, but why is this not shown over there? And what is this guy's problem? x/2 ही तो रहेगा यार, और क्या रह सकता है? Oh shit, ये 12 squared है यार, ये 12 squared है, so this thing is like 3 squared into 4 squared, तो ये तो सिर्फ 16 हो जाएगा इनफैक्ट. ओके, सो ये 4/3 नहीं है, ये सिर्फ 16 है. या तो ये सब डिलीट करो, वी डोंट वांट ऑल दिस. This is x squared upon 16, sorry, x squared upon 64, y squared upon 16 equal to 1. So once again just 2b squared, so 16 squared upon a 64, so it's like 2 into क्या ये 2 power 4 का square 2 power 8, 2 into 2 power 8 upon this thing is 2 power 6, yeah, because 4 cube. Cool, so this thing is just 2 squared, और ये हो जाएगा 8. Okay, cool. Next question.
The solution of the differential equation where k is an arbitrary constant is dy by dx equal to y upon x plus f of this thing upon f dash of this thing, where k is an arbitrary constant. k कहाँ पर k है? ओ अच्छा, सॉल्यूशन में k. सो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बस एक काम करो ना, y इक्वल टू के एक्स पुट कर दो, वेर k इज़ लाइक सम फंक्शन ऑफ x. नहीं, k ऑलरेडी यूज हो चुका है, सो इंस्टेड विल जस्ट से कि y इक्वल टू टी एक्स, where t is just some function of x. So this will give us what, dt x plus x, sorry, plus t dx upon dx, which is t plus x dt upon dx. u क्यों ना पुट करोगे, t के जहाँ पे u यूज़ कर लेंगे अपन. फाइन, सो u प्लस x du by dx equal to u plus f of u upon f dash of u, and this cancels, so this just gives us dx upon x उधर भेज के equal to du f dash of u upon f of u. Cool. मतलब कि natural log of x equal to like natural log of wait, f dash is like what with respect to x, right? but नहीं, इसमें तो u है in fact. So like okay, f dash is just any function, yeah, और in this case उसमें u पुट किया है, so this is with respect to u या फिर कोई भी वेरिएबल, राइट, बट उसकी वैल्यू तो u पे निकाल रहे हो तुम, so we can treat it as df of u upon du. So natural log of f of u plus some constant, so that means f of u is just kx, which means f of y upon x equal to kx. Okay, got this thing. So yeah, I think I'll stop over here. Bye.